गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टॉक गुरु एनकेएस। मैं हूं एनकेएस और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्टॉक गुरु एनकेएस। और क्या जबरदस्त मार्केट का आज सिनेरियो दिख रहा है। बस ऐसा रोज हो जाए तो कमाल ना हो जाए। अनइमेजिनेबल अपसाइड ऑफ मार्केट, 154 ट्रेड्स अप, 28 डाउन इन एफएनओ। और मार्केट ग्रीन ग्रीन और सुपर ग्रीन है आज। तो सबसे पहले जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। दिस इज दी चैनल विच यू आर वेटिंग फॉर। इंडेक्स ट्रेडिंग, इंडेक्स ट्रेडिंग इस चैनल के थ्रू अगर आपने समझने की कोशिश करी तो आप बहुत 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 कुछ सीख सकते हो। और मुझसे जुड़ने के बाद आप एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर भी बन सकते हो। सो प्लीज़ pay attention to this channel and trust my uh, skills on this. And firstly, this live stock market commentary is sponsored by Dhan app, and this is Dhan app interface which you are watching right now. I provided the links. Kindly open an account with them. It's absolutely free of cost. बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगेगा। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो बिल्कुल समय ना बर्बाद करें, तुरंत अपना अकाउंट ओपन करें धन ऐप के साथ। और उसकी बहुत सारी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ का यूज़ करें। एंड इट्स गॉट सर्टन फीचर्स विच आई हैड एक्सप्लेन्ड in my most of the streams. I would like to all of you to just really go through that. In Dhan app, you can trade directly from trading view charts on all platforms. You can get instant margin benefits by plugging shares. Then it's got some unique features like reverse order, technical order, draft orders, और डेडिकेटेड ऑप्शन ट्रेडिंग ऐप ओनली फॉर एफएनओ ट्रेडर्स भी है। और सबसे लास्ट में और वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और आज राखी के पावन दिन पर फीमेल कस्टमर्स जो हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर वो धन ऐप से ट्रेड करते हैं तो जो ब्रोकरेज है उनको सिर्फ 50% चार्जेस देने पड़ते हैं। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस ऐप। एंड डू नॉट वेस्ट एनी फर्दर मोमेंट, just join that account opening process and enjoy the trading. Okay, so coming back to the market, it's been 45 minutes and निफ्टी का जो है सिनेरियो है कुछ इस तरह से है। दिस इज योर 1 minute चार्ट ऑफ निफ्टी राइट नाउ। ओके, एंड let me see if possible I can bring it. So this is the Nifty chart right now here. I will try and bring Bank Nifty also here. ओके, एनीवे, थोड़ा सा उसमें मेरे को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा रिसर्च करके कैसे करना है। अदरवाइज एक ही शीट पे दोनों आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, एंड दैट विल बी मोर हेल्प। हर लाइव स्ट्रीम में मैं हमेशा कोई ना कोई ट्रेड सेटअप बता के, समझा के, सिखा के बेनिफिट करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। एंड दोज हु आर वाचिंग रेगुलर, दे वुड बी अवेयर ऑन दिस। एंड तो निफ्टी का जो है सिनेरियो कुछ इस तरह से रहा आज की। ओके, एनीवे, लीव दैट थिंग राइट नाउ। निफ्टी के बारे में पहले डिस्कस करते हैं फटाफट। कल जो है 17,534 पे क्लोज होने के बाद सीधा आज की ओपनिंग देखिए, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर हुई। और उसके बाद उसने हाई बनाया 17,719 का और लो 17,668 का। तो ओपनिंग होने के बाद निफ्टी जो है वो थोड़ा साइडवेज मूव्स करता हुआ। बट थिंग इज दैट हम लोग बहुत ऊपर खुले हैं। अगर आप देखिए ऑप्शन चेन को, अगर समझिए उसको, तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि इट्स बीन मैग्नानिमस ओपनिंग और शॉर्टर्स की बहुत बुरे हाल हुए हैं। सारे कॉल राइटर्स ट्रैप हो चुके हैं एंड यू कैन सी क्लियरली। अभी कोशिश की जा रही है कि 17,700 पे निफ्टी को बांध कर रखा जाए कॉल राइटर्स का, बिकॉज वहाँ पे 1,19,00,000 का ओआई बिल्डअप है
राइटर्स का, लेकिन जो पुट राइटर्स हैं उनके इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है कि आप खुद देखिए कि अराउंड 17600 17650 पे जबरदस्त उनका बिल्डअप हो रखा है एज ए सपोर्ट। तो मार्केट आज जबर मतलब मेरे को शब्द नहीं मिल रहे, तो इसलिए आई एम रियली स्टैमरिंग सॉर्ट ऑफ। यू सी 42 आर अप एंड सुबह तो 48 के 48 ऊपर से सिर्फ दो नीचे थे, एंड इवन द वन विच आर डाउन कैरी हार्डली एनी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेटेज। ओके, तो इट्स ऑल फुल ग्रीन, ऑल थैंक्स टू द यूएस मार्केट का कल का जो इन्फ्लेशन डेटा आया। अब क्लियर हो गया कि देर इज नो रिसेशन इन यूएस, दैट्स व्हाट द इंडिकेशन इज। इफ इन 3 quarters in a row there is a issue with respect to the growth or inflationary data, then they declare officially as a recession. But in US it's now absolutely no chance of any recession news or anything. It's been very clear। और कल 500-400 पॉइंट ऊपर होने के बाद भी आज सुबह का फ्यूचर ऊपर है। पूरी वर्ल्ड की मार्केट्स आप देख लीजिए ग्रीन है, इवन तो ब्रांड थोड़ा सा ऊपर हो चुका है, बट दिस इज a huge news, huge, and that's transformed entire market into green। And bank nifty actually is the you know इंडेक्स टू बी वॉच्ड। बैंक निफ्टी को आप देखिए बहुत ही जबरदस्त आज रहा है। कल जो बंद हुआ था 38,287 पे, आज वो खुला वहां से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ऊपर, 500-600 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद भी अम, उसने अपने आप को मेंटेन किया। 38,712 पे खुलने के बाद उसने 853 का हाई भी लगाया, लो है 650 के आसपास का। तो उसकी ओआई तो अगर हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो इट्स अमंग द टू, इफ यू सी it's bank nifty which is dominating, and reason being all banks, most of them are green, and ICICI lifetime high के ऊपर, and that's the big plus for this bank nifty। And then you've got Axis Bank there, then followed by all the PSU, Bank of Baroda, Fed Bank, PNB। तो जबरदस्त सिनेरियो है, and this has led to a bank nifty which is very comfortably placed now। तो बैंक निफ्टी का भी यही सिनेरियो है। अब यहाँ से आगे क्या? Well, बैंक निफ्टी right now is trading at around 38,831, so it is aiming that 39,000 range। ओके, वहां पर आपका कॉल राइटर है, एंड देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अराउंड 44 lakhs ओआई। यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी है, एंड देव गॉट अ मैसिव सपोर्ट एट 38,700। तो 38,700 पे बैंक निफ्टी और उससे नीचे बहुत स्ट्रांगली सपोर्टेड है। अभी हम लोग 38,800 के जस्ट ऊपर है। आज मैंने सुबह ही अपने ग्रुप में कुछ बहुत ज़बरदस्त ट्रेड्स सेटअप बनाकर दिए, एंड दे जस्ट ब्लास्टेड लाइक विद इन नो टाइम। ओके, स्पेशली बैंक निफ्टी की बात करते हुए मैं बता रहा हूँ। I had given this 38,700 trade when it was around you see 125 odd, and within no time it went blasted upside to 70 odd points। तो देखिए, ट्रेडिंग करना सीखना है तो प्लीज़ जुड़िए मेरे से। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर राइट साइड बॉटम में रिफ्लेक्ट किया हुआ है। टू नॉट मिस दिस इजी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी। गाइस, आई एम टेलिंग यू, index trading will give you massive day earning that you can't even imagine। it's just कि आपको you need a person who is totally into this, and I'm extremely dedicated myself into this for many years now। Okay, because I see a lot of data, a lot of analysis, I just do 24/7 this thing full time। Okay, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, लाइक हाउ डू यू डिसाइड व्हाट्स गोना हैपन नाउ एंड व्हाट्स द सिनेरियो लाइक। तो आप देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो इट्स ओके। सो नाउ ग्रेट। तो अच्छी बात यह है कि वी आर एबल टू सी बोथ टुगेदर। ओके, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड यू ऑल टू विटनेस। बिकॉज क्या होता है कभी कभी दोनों एक जैसे परफॉर्म करते, बट समटाइम्स दे परफॉर्म अ लिटिल डिफरेंट बिटवीन ईच अदर। तो ये निफ्टी है और लेफ्ट साइड में आपका आ गया बैंक निफ्टी। ओके, दिस इज व्हाट आइडियली आई वाज लुकिंग आउट इन माय सेटअप। ओके, फॉर विच इट टुक लिटिल टाइम। तो आप देख सकते हैं कि comparatively if you see both the charts now, your left side you're seeing bank nifty and it's a 1 minute chart। okay, तो बैंक निफ्टी का रिदम जो है वो
बिल्कुल ऊपर की तरफ है, इट्स लाइक मोर ऑफ ए फ्लैग पैटर्न। दोनों में फ्लैग पैटर्न ही है, यानी झंडा जिसमें एक डंडा है नीचे और ऊपर है झंडा, आपका झंडा और डंडा। तो ये जब ब्रेकआउट्स तब होते हैं जब ये इनका टॉप लेवल ऊपर की तरफ, यानी कि निफ्टी के लिए अच्छी बात तब होगी जब वो 17,700 को पार कर जाएगा, तो यू विल हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी ट्रेड्स कमिंग अप देयर। And in case of Bank Nifty, well, every high it is going to break, it's going to move only one direction. That's up. Okay. So it's that way you have to look at the data, and accordingly you have to see which are the trades which can be formulated right now and which should be the break even kind of a trade, यानी कि उन trades में आपको loss होने के chances बिल्कुल negligible हो जाए। तो उसके लिए we will again revisit this OI data of Bank Nifty specifically, because Nifty हम लोग अभी touch नहीं करेंगे. We will focus today for a change into Bank Nifty. So just imagine you should have both index understanding, so that अगर एक ना चले तो दूसरे से पैसा आ जाए, right? Okay ना? So now if you see carefully among the Bank Nifty strike prices, so volume wise we can see that there is a lot of volumes at various levels, and the max volume is coming around 38,800. That 38,800 call should be kept on the system. तो ऐसे आपने कॉल लगा ली यहाँ, जैसे 11 तारीख की एक्सपायरी है जिसमें, ओके ये देखिए ये 140 चला गया अभी, so I'll keep it a simple chart on this like this, okay। ये कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं लगाना, याद रखें, और इसको आप ध्यान से देखिए। अब बेस फॉर्मेशन इसकी 125 के आसपास है, तो इसका आप 125 में से लेके 115 से 125 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं, ओके। इसको अगर एज ए ट्रेड सेटअप हम देखेंगे, फाइन। और हम ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी अगर 38,900 को पार करेगा तो ये ट्रेड बहुत ज़बरदस्त अपसाइड देगा आपको, ओके। इसने अभी तक सुबह से अपना हाई क्या लगाया है, लेट्स सी फास्ट फटाफट। इसका हाई 150 का लगा है, तो हम इसके जरा 1 मिनट के चार्ट को एक 15 मिनट या 10 मिनट में कन्वर्ट करके देखते हैं, विच आर द एरियाज वेयर इट कैन फाइंड इट सेल्फ हेडिंग टुवर्ड्स। वेल देखिए, ये देखिए इस तरह से आपको एक एक क्लटरिंग दिख रही है, दैट बिकम्स सॉर्ट ऑफ ए probable target on the upper side. So I see this trade going towards 175 to around 180 प्लस, तो 180 प्लस का इसमें टारगेट बैठता है, इफ यू आस्क मी वेरी फ्रैंकली, दैट्स हाउ आई डू इट। 180 के 180 और उससे ऊपर का टारगेट शुड बी प्लेस्ड ऑन दिस वन, एंड द स्टॉप लॉस हैज टू बी समवेयर अराउंड 115। सो आप देखिए इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 140 राइट नाउ रफली। तो मैंने बात की है 180 40 पॉइंट के टारगेट की बात की है, और लगभग 25 पॉइंट का एसएल है, तो 180 से 200 भी जा सकता है ये। So this is how your risk to should be your risk to reward ratio placed smartly. So I believe ये इसी रेंज में बाई करना है आपको, 130 से 140 के बीच अगर इसको बाई आप बाई करेंगे तो 115 से 120 का आपका एसएल बैठ जाएगा। लोअर लो 115 और 180 के ऊपर का टारगेट इसमें बैठेगा। तो दिस इज हाउ आई सी बैंक निफ्टी, primarily because it is placed itself above 38,800 levels, and as far as Nifty is concerned, I told you it has to be above 17,700, and if that happens then 17,500 call should be the focus trade. I'm talking about just two trades now, okay, be focused again, and let's know all other things, okay। तो बैंक निफ्टी के केस में 17,500 will be your focusing a trade if as and when bank nifty crosses its 17,700 areas, and the moment 17,850 is crossed, this trade is going to start blasting upside. So 38,800 in case of bank nifty and 17,500 in case of nifty, and देखिए ये अभी it is the latest thing, all 11 up and just about one down now. So banks are extremely very positive, और ICICI बैंक तो कमाल करता हुआ लाइफ टाइम हाई की तरफ जाता हुआ, और इन सब की अच्छी वेटेज है। रिलायंस इज ऑल्सो participating in the rally, so all top guns are participating in the rally, and we'll see where the picture moves. So 138, so keep an eye on this. My channel is different from all other channels, okay, keep an eye on every minute thing which I try and teach here in specific duration, okay। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं future heat map, and that you find that auto, let's start with auto, well superbly placed,
Banks exceptionally placed. Okay, if you see to go to cement, well, cement is flat, strange. Next we come to the energy part. Well, यहाँ पर भी थोड़ा सा माहौल मिक्सअप है. IGL is doing pretty well, but then not all are participating. Let's see the FMCG. Well, they are also mixed bag. Finance में आज के देख लेते हैं. What's the scenario? Finance is doing pretty okay. Finance is much better. What about IT? Well, IT is absolute green, no issue in that. Metals, they are also fine. Pharma participation is okay, kind of. It's gonna move up only. तो देखिए majority of sectors are moving in the direction market is trying to move itself. तो आज का दिन एक्सपायरी का दिन होने के बावजूद भी एक्शन सुबह से ही है. इतनी बड़ी गैप अप होने के बाद भी नथिंग हैज कम डाउन सो ड्रास्टिकली. तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है. जनरली क्या होता है व्हेन यू गेट सच बैकअप बिग गैप अप्स, टेंडेंसी इज टू बुक द प्रॉफिट्स. बट आज जिस तरह का मोमेंटम मेंटेन है, इट इज द फेस्टिव डे आल्सो, बट द मार्केट इज ओपन. सो इट्स रक्षाबंधन, सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल वंस अगेन. तो कमिंग बैक टू द ट्रेड पार्ट, वेल दिस इज ग्रेट न्यूज़ बिकॉज हम अब एक कुछ वी आर इन टर्म्स ऑफ लाइफ टाइम हाई ऑफ बैंक निफ्टी हम लोग लगभग 11-1200 पॉइंट दूर हैं अब. और जिस तरह से शुरुआत हुआ था इस साल का आफ्टर मार्च, it was just last month when Nifty was able to keep itself in green, or August month is blasting like anything. So it's going to be a green month. I don't see any reason why August month में there should be a deep fall. So अगस्त महीने में हम 17,000 के ऊपर रहेंगे ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और कंसिस्टेंटली बने रहेंगे. सो ये बड़ी बात है और अच्छी बात है. इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ट्रेडर को पार्टिसिपेशन करने का मन करता है. And people who just run away when they see the red lines across stocks and all that, so that fear syndrome moves away, because the fear of any kind of a coronavirus or something is drastically reduced now, with all booster dose and all other things being done for that. So क्या होता है कि कभी कभी most of the time we used to think कि अरे यार अब ये क्या होगा, how will this happen and that happen. Well, everything is in more or less controlled scenario in terms of hindrances. There is an issue between China US now, that depends ki, that can definitely change the whole setup. But overall if you see both bank nifty today will go by day. हम लोग future का ज़्यादा नहीं discussion करेंगे. We should discuss only what's happening on the day, right? So on the day, both the bank nifty and nifty charts are in front of you, and nifty trying to consolidate. Bank nifty is not falling flat. 38,800 पे ऊपर maintained है. So in case of nifty, it's trying to regain its 17,700 level. And again, to remind you, this entire live commentary is sponsored by Dhan app, and I've given the description about Dhan app, and it's great app. If you open an account and look at the point number 5, female customer will get just half brokerage. Okay, they're going to pay just half brokerage, so that's great advantage for opening the account with them. The KYC process is less than 24 hours, so do not waste any further time. Just go to the link and open an account instantly, free of a cost. There's not going to be any charges as such, okay, for account opening. So just do it, don't waste your time. Okay, any query, anything coming in your mind, you're all welcome, and you can ask me. ओके, तो मैं जो बात कर रहा हूँ 38,800 38,800 कॉल, एज आई से, शुड बी ए स्टडी ट्रेड, बिकॉज आई डोंट सी मार्केट फॉलिंग डाउन वेरी मच, एंड सिंस यूएस फ्यूचर्स आर वेरी मच अप, और वर्ल्ड मार्केट की भी कोई ऐसी रिवर्सल के चांस नहीं है. तो आज बिल्कुल वन वे ट्रैफिक है. तो चांसेस आर, देखो सुबह मार्केट ने बहुत मौका दे दिया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है there is still a space to go for the upside, even though today it's a weekly expiry day, fine, but still need not to be worried about much on that.
हम लोगों को सिर्फ ये एक नोट करते रहना है कि व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट बिल्डअप इज हैपनिंग बिलो 38,800 areas. So what's the buildup? 48 lakhs at 38,700. Then you got 35 lakhs at 38,800. So you add up both of them, you got around 83 lakhs, and at 38,600 another 30. So 1 crore तक का आपको तगड़ा क्वेश्चन है बिटवीन 38,800 to 38,600 एरिया. तो नीचे की तरफ गिरने के चांसेस काफ़ी कम हैं मेरे हिसाब से. मार्केट का ठीक ठाक होल्ड है मार्केट का. ऑन द कॉन्ट्रेरियन, इफ यू सी the probability of its reaching towards 39,000 is more because the premiums around 39,000 are, it's at 50 rupees. So there is every possibility whereby if you see the premium at around 38, 500 areas, 600 area is below 50 rupees. तो जनरली क्या होता है, ये एक टेंडेंसी होती है कि अब यहाँ पर जो है चांसेस जो है मार्केट के गिरने के और कम होते जाएंगे, राइट. So that's how you do it. And do subscribe my channel. Every day if you watch the videos, they are very different from all any other live streamer, because this is uh, the thing. And ये देखिए PCR, if you see, just let me out of it. Okay, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का PCR आपके सामने 1.5 इज वंडरफुल. तो पीसीआर के मामले में मैंने जैसे आपको पहले ही कह दिया था, इट्स बैंक निफ्टी विच इज रियली डोमिनेटिंग एक्चुअली. तो 38,700 के ऊपर आप देख लीजिए पुट राइटर हावी है, 38,800 पे पुट राइटर हावी है. और इट्स जस्ट अराउंड 39,000 वेयर कॉल राइटिंग इज मोर. बट ऑल इन ऑल थिंग्स आर इन कंट्रोल इन केस ऑफ बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली. And now if we see, let's try and see निफ्टी का क्या है. तो निफ्टी के केस में देखिए ऐसा है कि थोड़ी सी अभी कॉल राइटर की ग्रिप बनी हुई है. यहाँ पे यू कैन सी द ब्लू लाइन इज अप, सो द मोर दैट इज अप. तो और इधर पीसीआर भी थोड़ा सा वीक है, 1.13 है कंपेयर टू द बैंक निफ्टी पीसीआर. तो पीसीआर जब ज़्यादा ऊपर रहे दैट्स गुड फॉर द मार्केट. तो चांसेस ऑफ बैंक्स परफॉर्मिंग well, more in simplifying definition. लेकिन जब भी बैंक निफ्टी अपना 17,700 का लेवल तोड़ेगा, इट्स गोना ब्लास्ट अपसाइड. एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, डू फोकस ऑन 38,800 कॉल. एंड that's gonna be the magical trade once this 38,850 gets crossed. And that's what precisely is happening right now. We are around 38,851. तो बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम मार्केट में. यू जस्ट कैन नॉट इवन थिंक अबाउट शॉर्टिंग एनीथिंग. इट्स ऑल लॉन्ग लॉन्ग एंड लॉन्ग. तो जो शॉर्टर्स थे वो तो बुरी तरह फंसे हुए हैं. दे आर गोइंग टू बी क्रिबिंग. उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि करें क्या, बिकॉज दे नीड टू बुक इट आउट बिकॉज दे हैव नो चॉइस लेफ्ट नाउ. फाइन. So 38,800 is your darling call here, and should be aiming at 180 plus to 900, or 180 to 200, and it's just moved up to 140 now. Okay. Uh, as far as Nifty is concerned, still pretty flat. So yeah, this is the one you're going to be focusing right now. 38,800. This is your call. Okay, this is your call. Fine. It's got to be your call. As I told you, 115 to 120 somewhere you're going to keep your SL. Aim for 180 plus. Fine. Do not ever think of trading without keeping an SL in index. So I've been deeply into this field for quite some time, and I can really vouch myself on this, that बिना SL के जब आप करोगे तो ये होगा नहीं होगा. SL आएगा, not an issue. Let it get triggered, not an issue. You're going to get that much of a loss which can be recoverable. Okay, so keep one thing in mind. Loss जो रिकवरेबल हो सके उस तरह का ही स्टॉप लॉस मैनेजिंग आपको करना है. फाइन. थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होने के भी चांसेस हैं डेफिनेटली, नॉट डिनाइंग ऑन दैट. बट देन ऑल इन ऑल वी हैव टू सी टुडे इज super bull day. Okay, today is a super bull day. So all in all, if bank nifty gets tired, it's going to be nifty's time to rock on.
तो यही चलता रहेगा आज। अगर एक इंडेक्स थोड़ा सा भी थकता है तो दूसरा, जस्ट सी हाउ इट ब्लास्टेड नाउ 158. सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू अबाउट द सेम ट्रेड, ओके। इट डिड केम डाउन बट आई टोल्ड यू 115 तक आपका एक्सेल बैठेगा, इसमें 150 चला गया है। सो आई हैड सजेस्टेड दिस वन, एंड द वे market is now creeping up, it's like amazing. Let's see what's the scenario. Okay, push आया है, दोनों में simultaneous push है, both बैंक निफ्टी निफ्टी are moving up now. You see 17500 call there, right, rightly placed here. Let me see the data of that. Okay, ये है fine. So what I am saying, 17700, that's the one we are looking at. The moment that happens, you go and enter on this. Okay, तो इसका जो कंसोलिडेशन है 184 की एसएल बैठती है, इसकी मोटा मोटा 185 के आसपास का एसएल, यानी 15 पॉइंट का यहाँ से एसएल लगाकर I think you should start aiming on this also. I'll just see what kind of a target does it can create. Okay, fine. Well, I see a minimum target of 40 points from here. यानी what I'm saying is ये 250 के आसपास I am looking out somewhere around 250 plus on this in 17.5 call. Uh, it's Nifty heading towards 17,700, and Bank Nifty, as I told you that this is going to be the call of Bank Nifty, and it precisely blasted upside, and it went to as high as how much, 158, I guess. Let me check it out. Went to 164 is the high made. Okay, is it? Maybe. Okay, so वही है. So the direction needs to be very clear. What we are trying to do needs to be understandable. On what basis we are saying it needs to be clear. तो तब कहीं जाके आप एक ट्रेडर बनते हो. ट्रेडर बनने के लिए better focus on the screen in the first hour. पहले 1 घंटे में तो आपको मेहनत अपॉर्चुनिटी मिलती है जिस दिन, लेकिन एक्सपायरी का दिन होता है उस दिन आपको ऑलमोस्ट फुल डे यू गेट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज. फाइन. सो गाइस, like this channel, subscribe, and bell icon has to be very much there, because I do not stream for entire 5 to 6 hour when market is on. I stream primarily on the first hour period, and post that I see what happens after 2 o'clock. Okay, तो मार्केट जो है पहले घंटे और आखिरी घंटे में आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी प्रोविजन करवा के देती है. थर्सडे एक्सेप्शन, उस दिन यू कैन हैव एनीथिंग एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम. फाइन. इफ यू वांट टू बी अ ट्रेडर, वेल, you are at right place at right channel, and if you want to enhance your index trading skills, you bet you are at right channel. And trust me, my skills, there are many people who have been with me for quite some time, and they have experienced that thing which I am trying to say convey here. Okay, and it takes you around 4 to 6 months to become a successful person, because in trading you need a thumb rule of consistent half year of consistency is needed. If you are managing half year of consistency, like month on month you are plus, then I think you are on from there. So join me. I'm going to teach you certain methodologies, certain psychological aspects, and you bet you're going to come out very positive, and you yourself are going to find out trades the way I am doing. मेरे हर स्ट्रीम को देख लीजिए. एवरी टाइम आई कम ऑन स्ट्रीम आई कीप समथिंग और द अदर एब्सोल्यूट फ्री, and you can see how smooth now 38,800 is moving up. So as I told you, it's going to be around aiming for at least around 180 plus 200. Okay, because the entire aim of Bank Nifty is to go towards 39,000. It's already 38,875 now. So when we were speaking that time, it was just below 38,850. Fine. And Nifty on the other hand is trying a little of, not struggling exactly, but definitely not at that pace at which Bank Nifty is maintaining itself. दोनों के charts आप देख सकते हैं. You can see the variable, you see relative difference, not variable, relative difference, right word, sorry. And
So this is how you create a setup for yourself. You got to be saying this. Bharti Airtel. Just a second. Bharti Airtel. So telecom. Bharti is doing pretty fine. Bharti has a setup in which it's got some support around 650 areas. Okay, and right now it is at 710. So yeah, well, you can see, in this screener also it's around neutral areas only. It's तो भारती का हम लोग ये कह सकते हैं कि there's still a scope of improvement for भारती. Because क्या हो रहा है, it's not moving above 750. The moment it comes around 750, it just falls from there. So I don't think it's ideal to be thinking about Bharti. I'm not very confident about Bharti right now. So we should avoid it, okay? Because you see this 20 demo 714 है, so if it moves around above 715, maybe something will happen, but to an extent, well, बहुत ज़्यादा upside मुझे नहीं दिख रहा है भारती में time being. I'm not very fond of this telecom sector as such. Okay, so that's my feedback on this. And Prabhul, I told you to get in touch with me. You don't even pick phone, so uh, I'm 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 not able to understand. Do you really have an intention of joining me or not? Please specify it. If I'm calling you, I mean that's like I'm trying to understand what's your approach for the market. Is fine. Anyway, take your own call. I mean, all I can say is that if you want to be serious learner, get in touch with me through that WhatsApp number. तो वापस आते हैं, we see that there is some consolidation still on in terms of index. And Prabhul, if the trade, which one trade if you should look out, it has to be ICICI Bank. It is heading towards 1000. It can really blast, and just check it on all the data available for that, and it's just blasted itself upside. So I see ICICI Bank futuristically going very smoothly towards 1000. Okay, so if anybody wishes to put his money, well, the best place is ICICI Bank. Okay, so where are we right now? तो देखिए हम देख रहे हैं, we can see right away that Nifty is indeed struggling to reach that 1700 mark, but entire day is still left, so I'm very sure that's going to be reaching very much there. And as far as Bank Nifty is concerned, मैं अभी भी बहुत confident हूँ. Bank Nifty will aim today to hit that 39,000 spot, and it should do it. And the moment when Bank Nifty touches 38,900 area, the trade 38,800 call, which I have suggested a while, this one should boom up to 200 and above, 200 and above. Very confident in that. Okay. So keep an eye on the screens. And today is Super Bull day, as I did keep telling, because bulls have dominated like anything. The chances of market getting reversed or being booked up big time profit booking, I see very few. People are consolidating their trades. People are buying. There are a lot of investment going on. Looks like bulk investments sort of will be happening, because क्या होता है कि एक signal has come from the United States of America now that there's not going to be any kind of a recession coming to the world. Okay, when this happens, sentiment changes. So this is what the funda is all. And if you see the world markets, still they are green. So nowhere I see any issue coming. You can see entire China, Japan, Hong Kong. Our market too is obviously doing very well. In good, US futures are doing pretty well. Now we'll come to know around 2 o'clock how European market responds. But all in all, Super Bull day for the market, and
I think the more actions expected. I'll once again reiterate two levels. For Bank Nifty, it's aiming around 39,000, and the trade to watch for Bank Nifty trader is 38,800 call, and should be aiming at least 200 for it. But the downside stop loss, as I suggested a while ago, was 120, 115 area. Fine. 115 is the lower low side to be staying in the trade. In case it comes around 115, you're out of it. Okay. On the upper side, well, minimum 180 plus is the target one should be aiming on this. And as far as Nifty is concerned, it all depends on when Nifty crosses 17,700 areas. 17,500 call should be aimed for a target of at least 250 with a lower low 184 as a stop loss. Fine. कोर्स के बारे में व्हाट्सएप करो यार, वहाँ बताऊंगा, यहाँ मैं इसमें क्या बताऊंगा। व्हाट्सएप करो कोर्स के बारे में, आई विल टेल यू देयर। व्हाट्सएप करो। मैं वैसे भी यहाँ पे कई चीज़ें बता ही रहा हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, साइकोलॉजिकल अप्रोच टू द मार्केट। डेटा से खाली काम नहीं चलता है मार्केट में, है ना। तो वही चीज़ें मैंने बताने की कोशिश करनी है आपको कोर्स में भी। फाइन। तो आप व्हाट्सएप करिए प्रबुल, और फ़ोन उठाओ यार। इफ़ यू व्हेन यू आर फ्री यू शुड कॉल मी आफ्टर मार्केट आवर्स, वी कैन हैव अ डिस्कशन। ओके। So I think guys, it's around half an hour, and market is now trying to consolidate. So I'm not going to stretch hard on this stream right now because I have some real personal works also. So I guess keep an eye on the market. I've given you once again. I will, before leaving, I'll tell you two trades. That 38,800 call for you. Try to write down somewhere. That's a trade for you. You should aim for 180 plus 200 plus targets for this. Around 115 your exit levels for this. And as far as Nifty is concerned, totally, if it's 17,700, as and when it gets crossed, you should seriously try and take an entry in this one, and that's your 17,500 call, and should be aiming at 250 minimum. 184 is your exit. Fine. So this entire live commentary was sponsored by Dhan app, and I told you salient features of Dhan app. Female customers will be paying just half of the brokerage, and that's the unique offer they are providing. And account opening is absolutely free. The links been provided in the description. So to open it, less than 24 hours they open an account. Probably one of the fastest account opening they are doing pan India level. So thanks for being part of this stream. Please watch every stream minutely, and you're definitely gaining a lot out of it. And this stream is much different from all other streamers who just kill the time by being non-stop for 5 6 hours. That's utter nonsense, because nobody should be trading excessive in the market. The more you trade, the more you lose. Okay, you should be trading smartly in the market. If you trade smartly, there's no power on earth, I'm telling you, which is going to stop you from earning. Okay, so this is NKS signing you off right away now, and hope you like the stream. Please press like button, bell icon, and till I come up with the new stream, if time permits, second half. All the best. Wish you all a very happy trading. Bye bye.